So, friends, I was talking about that with today's session, we'll be doing multi-thread programming and learning all theory with no practical implementation doesn't make sense. So, the session has been configured in such a way that as and when you learn some theoretical concepts, we will also be practicing it out on the workspace. That's the reason we have said refer the workspace.py file. Okay, so let's go with the very first thing. Okay, so if anybody is interested to connect with me on LinkedIn, you're welcome. This is my LinkedIn ID, so you can connect with me on LinkedIn. So that post the workshop also, you and I can be connected. I believe people are still coming in. I cannot go full screen because of this. Okay, so friends, looking at of what is the application of thread, why will I use thread? Now think it this particular way. Supposedly, we are having a task to be implemented by coding, and our task is to do as simple as this a work. Somebody asks us to write a code to open an account in a bank. Now, to open an account in a bank, we'll probably look at a very simple task, but it is not as simple as it seems. So if you were to code this in Python, you would have to think of three major steps. The first step is uniquely, I repeat, the first step is uniquely getting a account number, because there are so many branches to a bank, and a particular branch cannot just say that okay, the last account number gave by our bank was so and so, so I'm going to add a plus one. And how do you know at that same instant of time? There are so many other banks which will also be opening accounts, so many other branches of the same bank also going to be opening an account. Plus, with ICICI Bank advertising that their digital app is completely a bank by itself, that means on a on an ICICI Bank app, you can actually open your account, apply for loan, create an FD, sell and buy shares, वगैरह वगैरह. So lots of things can be done from the app. So you need not go to the bank many a times. So right from opening an account up till buying and selling shares and keeping an FD or transferring money, everything can be done from the app. So so an account could be opened from the app also. So if I look at the app installs, so if there are, let's say, 10 crore app installs, so there are 10 crore branches, isn't it or not? So in this situation, doing a logic that I'll take the last value plus one is like absurd. वो तो सवाल ही नहीं उठता कि this is going to work. Then what we should do? Right, what we should do. So I hope you've agreed that doing a plus one is out of question. So generating a unique, the way of doing it would be that we would use sequences. Sequences are data structures, are predefined data structures in databases like Oracle, as well as other databases. Sequences are not available to you in MySQL, but then there are alternatives to it. There are alternatives to it. So either you're going to use sequences or you're going to use auto increment field in the backend database. So we will write some code here to actually connect with the database and either fetch the next number from the sequence or fetch what is the value of the auto incremented field last. What was the last auto incremented field value? Whatever is the value, we are going to fetch it and bring it to us. We will add 1 to that and provide it as an account number for the new customer. So the customer will get a new account number in this particular way. So this is going to be the journey of getting a new account number. Now, after getting a new account number, every customer will have his or her details like Aadhaar, address, type of account,
other family joint holders, वगैरह वगैरह. So all the account details have to be collected and they have to be validated. They have to be collected and they have to be validated. And because they have to be collected and validated, naturally, I repeat, naturally, it becomes a point that all the details are correct. Now, once they are correct, because you've already got one unique account ID, you will now have to insert this record in the database so that this same account ID is not utilized or given to anybody else. So this account number uniquely generated and the account details are now entered into the database. Okay, right. Now, when an account opening task was happening, some project manager comes and tells you that, okay, you have coded the account opening task. I also want next task to be done is buy, sell stocks, buy, sell stocks or mutual funds. So I want you to code a program called buy and sell. So obviously you will check whether that particular person has a valid demat account or not. If the person is having a demat account, if passed, if the person is having a demat account, then you would go ahead in further checking. I repeat, buy and sell, a person has a demat account or not. So I will further go to check whether the person is having that particular stock or not. You cannot sell a stock if it's not there in your demat. Either way around, you cannot buy a stock if you don't have sufficient balance. Monetary balance should also be there. So you will check for the stock. That means you will do the stock validation. Now, friends, after the stock validation, you will probably allow the person to do his transaction, which could be either buy or sell. It can't be both. It can be only one at a time. Now, I would like to know this from you. Please think and answer. ये जो पहला टास्क मैंने डिस्क्राइब किया आपको, called opening an account, it is in no way overlapping with the buy and sell of the stocks. That means in my entire project, these two things can run. In my entire project, these two things can run in parallel. I can have a customer opening an account and I can have another customer who is doing buying and selling of the stocks both at the same instant of time. And everybody will say yes, obviously, but there's nothing wrong about it, and that's a very obvious case. If there are so many employees in a bank, so obviously the bank software should support multiple operations at the same time. If you agree with this, that means you agree that a project or a process can have multiple parallel tasks. Let me keep each parallel task, let me keep each parallel task in a watertight compartment. So this is the compartment where I'm keeping the first parallel task, and this is the compartment where I'm keeping the second parallel task. You'll be wondering what I've drawn. I've drawn this wavery symbol, where this symbol is called as a symbol for a thread. So we are writing two simple Python codes. The first Python code, let's say we are dumping in a thread called T1 and it is responsible for opening an account. And we are dumping the code of the second in the thread T2, and let's say it's called as buy and sell stocks. Buy and sell stocks. Okay, right? So I hope this is going super simple and clear. So first is your thought process. Your thought process have to agree that yes,
I always need not think in sequential programming style. I should think in a way that yes, there can be a process where there are two tasks happening simultaneously, and each such task is going to be coded in a thread. Okay, and naturally the next. So, what are the use of threads or need of threads? I hope this is clear. In case if I am unclear on any particular aspect, you have full freedom to ask me on the chat. Please remember, I am answerable to your questions. Okay, within the given time frame, of course. So, if you've heard me, if you've logged in at the right time, you've heard me completely, you think you have a doubt, you're please welcome to ask me on the chat. Okay, right. Now, said this कि ये बात हमने अगर एग्री कर ली है म्यूचुअली, आपके और मेरे बीच में ये बात एग्री हो गई है म्यूचुअली कि हाँ, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रियल वर्ल्ड में जो हम रोजमर्रा इंटरेक्ट करते हैं. बैंकिंग का मैंने एग्जांपल इसके लिए बिकॉज बैंकिंग ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू, you know, so it's something which is very usual and very common to all our lives. So मुझे ये बताना है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां आप मल्टीपल इन पैरेलल टास्क करना ही चाहते हो, मतलब वो एप्लीकेशन यूजलेस होगा अगर उसके टास्क पैरेलल में ना हो. सी यहाँ पर मैं आपको चॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ कि अरे चॉइस है ना, चलो हम लोग ये टास्क पैरेलल में नहीं करते, ना 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 ना. मतलब जो एप्लीकेशन बनेगा उस पर टास्क पैरेलल टास्क सपोर्टेड होना ही चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेशन किसी काम का ही नहीं है, इज लाइक यूजलेस. ठीक है, आई एग्री. सो whenever you think that yes, your application needs parallel tasking or parallel work, then you should code those works in different threads. So use of threads I hope is clear. अब नेक्स्ट सवाल आता है कि what if this thread T1 experiences a exception. Please remember, आप exception threads के पहले पढ़ चुके हो. So the team at Sabo Siddiq, under the mentorship of Malik Man, has done a wonderful job. They have discussed with AICT to frame the syllabus of this entire workshop very meticulously. So I really appreciate efforts of Samreen, Lubna, and Malik, because Malik man, they have already, they have put a thought process. So there's not like the bundling of topics, the dumping of topics here and there, and just, they have given a thought process and found what is the interdependency of topics on the previous topics, which is an effort, huh? It's not easy. Okay, so coming to this now. So what we have here is the thread, and this thread T1 supposedly raises an exception. I know ऑल माई फ्रेंड्स विल से अरे रॉकी जी कोई बड़ी बात नहीं है, हमको एक्सेप्शन हैंडल करने आता है. जी मुझे पता है आपको एक्सेप्शन हैंडल करने आता है, लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आप एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तो आप करोगे ही, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है. लेकिन इस एक्सेप्शन की वजह से मेरा जो ओवरऑल प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस या ओवरऑल जो एप्लीकेशन है वो हॉल्ट नहीं होना चाहिए. आई रिपीट, वो हॉल्ट नहीं होना चाहिए. अगर मेरे एप्लीकेशन या मेरे प्रोसेस में at the same instant of time, let's say at 10:50 a.m., at the same instant of time at 10:50 a.m., if one thread is if one thread is doing the work of opening an account and leads to an exception, I see no reason that the other thread should stop working because one of his companion got stopped. No, no, no. So threads run like trains. This train is having its own. I always tell to my learner friends, consider T for task, consider T for thread, also consider T for train. एक ही नाम है ना, T for task, T for threads, T for train. So because you are doing thread programming, so naturally you are going in for a multitasking environment because you are doing multitasking as well. Multitasking, opening an account and buying and selling of the stocks
of two different people at the same instant of time in the same bank branch is happening. So, if this guy experiences a bad day, why is the other also experiencing? इसको तुम क्यों ढकेल रहे हो? T2 को क्यों रोक रहे हो? T2 should work. Simple. So the beauty of thread programming is that if we are having thousands of such multiple threads, not few, thousands of such multiple threads, if some thread experiences, if some thread experiences an exception, then other threads don't have any problem. They will still keep running, and due to which your overall process or overall project will not stop. It's going to run. Your process and the project is going to keep running. It's not going to stop. Okay. So that I hope is helping you to motivate you enough that why we should learn threads, because thread programming seems a little clumsy. Is little uh, थोड़ा सा वो घुमा फिरा के कोडिंग होती है, वो सीधी सी कोडिंग नहीं. Okay, so there's a lot of theory which is given here in the notes. Okay, now coming on to diagrams. If I look at a thread, so one process is made up of many threads, something like this. Yep, something like this. So one process could have one thread, or a process could have multiple threads. So if a process is having just one single thread, I repeat, if a process is having one single thread, then it's called as a single threaded process. जितने भी programs आपने अब तक किए दोस्तों, till yesterday evening, what all programs we all did as a big team, those all programs were single threaded process. On the other hand, we also have something called as a multi-threaded process, where you're genuinely doing that ICICI Bank wala app ka application, where you're dividing task into opening an account, closing an account, demat, buying selling of shares, getting a loan, वगैरह वगैरह वगैरह. So you are dividing it into clear modules, and each task is doing one particular work, and each task is being implemented by a thread. So this becomes a single project or a single process with multi-threaded. So it is called as a multi-threaded process. First. Second, you would notice that every thread is having something written here. What is this like? So every thread needs from its memory some stack space to store all the variables which it is using. So normally एक program जब आप लिखते हो, you create some variables, ना? You create some variables, you create some collections like a list, like a tuple. So जो भी आप मतलब ये जो thread T1 है, जो भी variables बनाएगा, जो भी collections बनाएगा, they need to be stored somewhere. Yeah, so they are stored in the stack space, and they also need some registers to hold the data. What is this code? Now, all these threads may need to share some code, may need to share some data, may need to share some files. Otherwise, all of these are not going to work independently, no? So when T1 finishes his work, he will probably have to give some signal to T2, okay, that this work is done. So that the next thread can get invoked or activated. So I agree that all threads work independently. मैं इसमें कोई deny नहीं कर रहा हूँ. They are all working independently. लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि thread T1 पूरा होने के बाद I should invoke the thread T2. Example. Suppose the thread T1 is supposed to open an account, and after an account is opened, the thread T2 is giving you the links, it's opening up the links and is giving you the passwords for various operations which you can do with the bank. Example, it's giving you a debit card, it's giving you your login credentials for net banking, it is giving you the login credentials for your demat account. So you opened an account in a bank, I agree, but now today with any bank, it is always a single sign on, no?
But today with every bank, it is always a single sign-on. You don't go to the bank and open a savings account separately, demat account separately, loan account separately. You don't do that. Everything is connected to your savings account. So your savings account is actually a single sign-on. तो अगर आपने अपना अकाउंट खोल दिया, वी नेवर से सेविंग्स अकाउंट, वी से अगर आपने अपना अकाउंट खोल दिया बैंक के साथ, the bank will verify your details, and moment your account is done, so thread T1 has done its work, and then it immediately invoke the thread T2, and as a thread T2 will generate your first time password, will generate a debit card, will generate demand account credentials, and all these things are going to be automatically emailed to you. तो अगर देखा जाए थ्रेड T2 ने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया, जरूर किया, लेकिन थ्रेड T2 वर्कड ओनली आफ्टर थ्रेड T1 finished his work. So there is a sequential flow. Thread T1 can run independently for person A, and during the same time, my friend, thread T2 was running independently for some person B. But after thread T1 for person A has finished, it is a due responsibility of T1 to inform thread T2 that भैया आप भी run कर लो for the person A. So T2 is now running for person A. And in parallel, the thread T1 is now opening an account for some other person called C. And T2 is doing the work for person A. So they're all sequentially working. Right. Now the point is, in such situations, there needs to be sharing of some session variables or some data. And that is what is being done by means of indicating this. So this is a shareable code, shareable data, shareable files. In a given project or a given process, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मल्टीपल थ्रेड्स कोड कर रहे हैं, हर इंडिपेंडेंटली काम करता है, फुली रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें कोई डेटा शेयरिंग की कभी जरूरत ही ना पड़े. मतलब अद्भुत कोडिंग होगी फिर तो, अद्भुत, आप मैजिकल वर्ल्ड में हो फिर, कि आपने ऐसी कोडिंग की हुई है कि इनमें कोई शेयरिंग नहीं और आपका पूरा प्रोजेक्ट बराबर से काम कर रहा है. फिनोमिनल अनबिलीवेबल कोडिंग होगी. ठीक है ना. एक नॉर्मल कोडर से अगर पूछोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं भाई, सम कोड, सम डेटा, सम फाइल्स हैव टू बी शेयर्ड, अदरवाइज यू कांट कोड. ओके, नाउ गेटिंग इनटू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. Every thread fundamentally has something called as a thread control block, and I would humbly request uh, one of my volunteer friends to come, one of my FDP friends to come online. See if Deepa Jain is around. If Deepa Jain is there, Ashraf Ali is there, anyone is, one of them is there, then please come on audio, because I want you to read some part. So Deepa Jain there on the link. Please tell me a hi if you're there. Hello, sir. Yes, is it Deepa Jain? Yes, sir. Yes, please, over to you. I wanted to read this very slow and gradual, this entire paragraph, and then I'm going to explain all the elements here. Please go ahead. This is a TCB thread control block. First thread identifier. Unique ID. TID is assigned to every new thread. Second is stack pointer. Points to thread stack in the process. Stack contains the local variables under thread scopes. Third is program counter, a register which stores the address of the instruction currently being executed by thread. Fourth is thread state, can be running, ready, waiting, start or done. Fifth is thread register set, registers assigned to thread for a computation. And last is a parent process pointer, a pointer to the process control block PCB of the process that the thread lives on. Okay. Now, Deepa, I have a very small question. आपने जो लास्ट टाइम पढ़ी, मैं उसको वापस से पढ़ता हूँ. A pointer to the process control block PCB of the process that the thread lives on. So when I'm talking about the parent process pointer, and you said thread process that thread lives on, so ऐसा होता है क्या कि a process is composed of many threads, or is it vice versa, thread is composed of many processes? Yes, Deepa.
Your answer. Equality. No, sir. It will points those who are live. No, 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 एक सेकंड. It is not live, it lives on. So lives on Lives. का मतलब होता है कि one process is made up of many threads. One process is made up of many threads. So process is like a project, and that project is made up of many threads. Right, yeah, you can mute yourself. Now I will go ahead explaining. Okay, so friends, now looking at this particular diagram here, oh, if people keep logging in like this and I can't go full screen, okay, right. So if I look at this diagram over here, I can understand that every thread has a thread control block, and this is like the brain of the thread. ये thread का दिमाग है. इस thread के दिमाग में thread पहली चीज indicate कर रहा है कि वो किस parent process को belong करता है. And remember, a thread can have only one parent process ID. It can have only one parent process pointer. But one parent process can have many threads. One parent process can have many threads. But one thread can only have one parent process pointer. Thread will of course have a unique ID called thread ID. Thread will have a state. Now what is the thread state? So a thread can be running, a thread can be blocked, a thread can be runnable. रनेबल का मतलब अभी उसको स्टार्ट होना है, रन अब तक हुआ नहीं है, वो रन होना स्टार्ट होगा. एंड देन we are having the thread with a running state, that means thread is physically executing, and thread is blocked, that means thread has got blocked. The thread needs some external resource, अब वो external resource को नहीं मिल रहा है, thread will go in the block state. Okay, the next is coming to be called as a program counter, where program counter means that every thread has a piece of code in it, and उस कोड को आप sequentially जब रन करते हो, any code which is sequentially running will have some certain steps, ना, like 1 2 3 so on and so forth. तो जो कोड के जो स्टेप्स है 1 2 3 4 अप टिल n-1, वो आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो, so all these steps 1 2 3 up till n-1, they have to get executed, and when they are being executed, the thread should know at what step it reached last. Suppose thread is having a 100 line program and you have reached till the step number 10, और स्टेप नंबर 10 पर आपने कोई ऐसा इनपुट आउटपुट रिसोर्स डिमांड किया है जो थ्रेड के पास अभी नहीं है, देयरफॉर थ्रेड इज थ्रोन टू द ब्लॉक स्टेट. थ्रेड पहले रनिंग स्टेट में था ना, वो रन हो रहा था, रन होने होते उसने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 9 तक एग्जीक्यूट कर लिया. लाइन नंबर 10 पर एक इनपुट आउटपुट रिसोर्स का डिमांड आई, वो अभी नहीं है थ्रेड के पास, तो थ्रेड विल गो टू द ब्लॉक स्टेट. लेकिन जब वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगी, तो थ्रेड विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक स्टेट एंड कम बैक टू द रनिंग स्टेट. लेकिन रनिंग स्टेट पे जब वो आएगा तो वो वहां शुरू कहां से करे, शुरू कहां से करे? सब नेचुरल है. स्टेप नंबर 11 से देखिए, जो नेचुरल आपको जो चीज लग रही है ना, ये चीज कहां स्टोर हुई होगी ना, कहां तो स्टोर करना पड़ेगा ना, ये नंबर 10 को. जैसे आप समझ में आए कि जो जो नंबर 11 है वहां से आपको शुरू करना है. सो ये नंबर 10 जो है, ये आप अगर स्टोर कहाँ तो करोगे तो ही पता चलेगा आपको कि आपका जो अगला स्टेप है वो नंबर 11 से आप शुरू करोगे, एंड दैट इस प्लेस इज कॉल्ड एज पीसी, प्रोग्राम काउंटर. सो द प्रोग्राम काउंटर हेल्प्स मी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन from where will I restart. I repeat my words, from where will I restart the thread when a thread comes back out of the block state. Next, register set, I told you some place where the data is getting dumped. Stack pointer also stack place where some data is getting dumped. Okay, this is a thread control block. Now, if I look at this diagram, I can notice that every thread knows who its parent is. Like we know who our parent is. Same way, every thread knows who its parent is. तो thread obviously अपने parent को point करता है. Remember, we cannot have orphan threads. I repeat my words, we cannot have orphan threads.
That means you cannot say I have got a thread with no process. हो ही नहीं सकता. If there is no process, if you delete the process, all the threads associated with the process will also be deleted automatically. First thing to remember. Second thing, stack pointer, of course, is pointing to a stack space. I repeat, of course, is pointing to a stack space. लेकिन, but this stack space to which you are pointing to, my friends, we all need to realize this is a part of the process memory. इसका मतलब जो कॉमन मेमोरी हमारी है, जो पूरे प्रोसेस को दी गई है, उसमें से ही कुछ छोटा हिस्सा दिया जाता है थ्रेड को. तो आपका जो कंप्यूटर मेमोरी होता है, रैम होता है या मेन मेमोरी जो होता है, उसको हम फिजिकली डिवाइड नहीं करते, उसको वर्चुअली डिवाइड करते हैं कि इतना हिस्सा जो है भाई पहला वाला थ्रेड लेगा, सेकंड हिस्सा सेकंड वाला थ्रेड लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Okay, right. So I just mentioned some time back about that processes can be single threaded or they can be multi-threaded. Now, अब थ्रेड प्रोग्रामिंग करते कैसे? थ्रेड्स का आपने यूज समझा, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर समझा, आपने थ्रेड और प्रोसेस के बीच का रिलेशनशिप समझा. अब ये समझते हैं, if you look at the instructions, we run the first thread program from workspace, and here we are creating two threads, finding active threads by active count method, and joining the main thread with two child threads using the join function. I'm just trying to use a few methods of the thread class in Python. So we're going to do this. But before we do this, there is some reading part that has to be done here. And I would request Dheeraj to please come online. Dheeraj, please come on audio. Yeah, Dheeraj, hi, good morning. Yeah. So, Dheeraj, could you please read this paragraph? First of all, is this font clear or should I make it bigger? Is it clear, visible to you? Yeah. Huh? Yeah, sure. Please. There are two modules which support. There are two modules which support the usage of threads Python 3. First one is underscore thread. Second one threading. The thread module has been deprecated for quite a long time. Users are encouraged to use the threading module instead. Hence, Python 3 module thread is not available anymore. However, it has been renamed to underscore thread for backwards compatibility with Python. Right. Now, Dheeraj, you'll be wondering that why is Mr. Rocky Jatiani talking about a thing which has got deprecated? The reason is that if you actually look at some thread projects on GitHub, you will still find that many of them which have been uploaded 2 years, 3 years, 4 years ago have used underscore thread module. So we shouldn't feel confused ना, underscore thread module कैसे यूज किया, ऐसा तो कोई मॉड्यूल है ही नहीं. हाँ, एग्री कि ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है, but the fact is that कि the Python 3, which we are all using Python 3.9 right now, it has actually renamed this old module called underscore thread as threading. Okay, so there are lots of projects which unfortunately still use. It's not unfortunate, but just जिसने GitHub पर वो project बनाया, he's not responsible to go on updating all the classes. He will say, "I have done the work, and it is open source. Anybody who wants to use it will make the changes." Kind of. Okay, so let's look at our workspace, friends. Let's go to our workspace. Okay, I'm giving all of you 1 or 2 minutes. Please make your workspace ready. Open up your terminal. Right, open up your terminal. Come on. Moment your terminal is ready, your workspace is done, you will say me yes, workspace ready. ऐसा आप लिखोगे workspace ready. That means वो सारे लोग मेरे साथ execute करने वाले हैं, and I want majority to execute. Otherwise, what is the use of learning if you're not executing codes? I'm giving Vasmita fantastic. Vasmita says workspace is ready. I was expecting that. Fantastic.
Right, so I'm waiting, I'm giving maximum 2 minutes for all my FDB friends. 2 minutes, okay? I should see maximum people saying workspace is ready. Very well, my friends. 2 minutes of time is up for you. Download your workspace and open it up and make it ready. Okay? I'm very surprised. Why Dheeraj? Okay, Dheeraj just message now is done for him also. Okay, why Ashraf Ali, Deepa Jain, Rutuja, all people are executing with me, right? SK Shukla is executing along with me. Why they're not saying ready today? Right? We're supposed to execute the codes together, isn't it or not? Because if you don't execute the codes and if you don't get errors, what will you ask me? Simple, isn't it? Okay, right. Okay, Sonal. Okay, Sonal has a question. Will it work in Colab? Yes, Sonal. Definitely. Threads are going to work in Colab. All the programs which we're learning till today will work in Colab. Tomorrow's session, which is in the afternoon, 2:30 to 4:30. Tomorrow is not 2 to 4, huh, everyone. Tomorrow is 2:30 to 4:30. I'm telling it to you, right? So, yes, Lubna or Samreen will definitely message on the WhatsApp also. But tomorrow is 2:30 to 4:30, practical session of socket programming. During that session of the practicals, that is not going to work on Colab. Okay, socket programming only on the command prompt. Rest everything will work. Okay, Sonal is also ready, it means. Sonal ready, Dheeraj ready, Vismita ready. I'm still wondering why others have yet not come. There are 6, 7 people who always say they are always ready. What is wrong with them today? Okay, Deepa Jain says ready. I'm still awaiting reply of SK Shukla, Ashraf Ali, Rutuja. Please be fast. Okay, now in parallel, let me explain you the very first program. So, in our very first program, my objective is explain to you how threads have to be used. So, I'm creating two active threads. I'm finding, I'm sorry, I'm creating two threads. I'm finding the active threads by using an active count function. Let's see how all this stuff works. So, first thing, I'm importing my threading module. Now, friends, threading as a topic is completely based on classes and objects. So, when you learn threads, in short, you are learning once again classes and objects. Okay, please don't worry for a minute about the definition of क्लास माई थ्रेड के अंदर क्या क्या लिखा है इसको प्लीज 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल वरी मत कीजिए डोंट गेट स्ट्रेस्ड ऑन इट लेट मी क्लोज दिस so what I see here is
is I'm just creating two thread objects, normal object. Why do you use the word thread also? Chalo, theek hai. I'm creating two objects. My first object is thread 1, second object is thread 2. And both of these fellows called T1 and T2 are in a simplest sense object of the class myThread. They are object of the class myThread. और ये जो यूजर डिफाइंड क्लास है ये आपने बनाया ना, है ना, अपना बनाया हुआ क्लास है ना, कोई प्री डिफाइंड सॉरी है. सो ये जो यूजर डिफाइंड क्लास है इसको आपने दो पैरामीटर्स पास किए हैं. पहला पैरामीटर ये है 1 और दूसरा पैरामीटर एक स्ट्रिंग है थ्रेड 1. अब एक काम करते हैं हम सब. लेट अस गो इन द क्लास myThread एंड सी कि जो क्लास myThread का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर दैट इज इनिट फंक्शन अंडरस्कोर इनिट, वो ये दो पैरामीटर्स को लेकर क्या कर रहा है. चलिए देखते हैं. The first parameter 1 will go into thread ID and the second parameter thread hyphen 1 will go into a variable called name. So some thread ID and some name has come over. What we are doing is, this rule we have learned it in classes and object chapter number 1 on the very first session, first day when we met on Tuesday, if you recall. I mentioned to you that जब भी आप inheritance करें जो आप कर रहे हो यहाँ पर, like class myThread is inheriting from the class called thread. It is a duty of the child class constructor. I'm not saying it's formality, it is duty. I said that the child class constructor should call the parent constructor, and that's what we're doing. Threading.thread is the parent, dot init is the init or the constructor of the parent, which we are calling. And what we're doing next is thread id जो आपने मुझे पास किया वो मैंने अपने पास असाइन किया, जो नेम आपने मुझे पास किया वो भी मैंने अपने पास असाइन किया. So the myThread object which we are making will have its own id, will have its own name, but remember it can only be made if you have called the constructor of the parent. अगर आप parent constructor को कॉल नहीं करोगे तो ये जो क्लास आपको यहाँ दिख रहा है फिर एक ऑर्डिनरी क्लास रह जाएगा. अगर आप चाहते हो कि ये क्लास एज ए थ्रेड क्लास बिहेव करे तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, इसका पहला स्टेप होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट के मतलब थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे. फुल स्टॉप देयर. This is the way to code. Okay. Now there are other ways to code which I will be teaching you, but that's going to come in the afternoon. I've kept both the styles of coding in two separate sessions because I understood theory part. We'll go in a traditional way, and then I'll talk about the professional or the practical industry way of coding in the practice session. Okay, that is in fact easier. Trust me, that is easier. Whenever you friends, whenever you make a class and you inherit the thread class, you have to code. I'm again repeating the words. I didn't say you may code. I say you have to code. Compulsory hai run function. Because run is a place where you're going to place all the code of a thread. तो thread का सारा जो code है वो run function के अंदर dump होगा. Simple. Next. Starting, I'm just printing the name of the thread, and next I'm printing is the ID of the thread. मैं और कुछ constructive काम नहीं कर रहा हूँ run function में. I'm just doing stupid work in the run function. I'm printing the name of the thread and I'm printing the ID of the thread just to show that रन का इंपॉर्टेंस है, रन कोड करना है. ठीक है सर, रन को कॉल नहीं किया, यहाँ दिख तो नहीं रहा कि रन को कॉल किया है. जी, रन को कॉल नहीं करते, रन को हम कॉल नहीं करते. रन तब कॉल होता है जब हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं. छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. दिस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज इमेजिन इज अ कार. This object in front of you, please imagine is a car. If you start this car, if you start this car, then
the car's engine actually starts, and there are so many different components in the car's engine which actually start working. The battery gives the initial ignition, the combustion system starts working. Okay, the fuel injection starts working, it pulls in the fuel, burns it so that the car gets the energy. Then you press the accelerator, the car starts moving. Did you do anything here with respect to the engine? Did you start the different parts in the engine? No, no, sir. I never did anything. All the engine parts started with just one ignition. Ignition principally was just to give a spark, and that spark's power was being taken from a battery, and the spark was necessary to initiate the combustion system. What I'm trying to say with this example of a car is कि you never started the engine, but the engine started no because of the spark. So exactly the same way, you don't call the run function. You just start the car. Oh, you just start the thread. I'm sorry. So when you start the thread, automatically the start method is going to call the run function of the thread. Next, two threads I have started at line number 20 and 21. 22 पर मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि भैया अभी कितने एक्टिव थ्रेड्स हैं हमारे पास अभी कितने एक्टिव थ्रेड्स हैं आपको लगेगा कि एक्टिव काउंट शुड बी 2 because thread 1 and thread 2 are only threads which is made by us and we have started them. But actually speaking at line number 22, the active count should be 3. So 3, third thread कौन सा है? So friends, now this comes to the more exciting part. जब आप thread programming करते हो तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है. सी प्रोसेस में जो कोड आप बोर्ड पर देख रहे हो अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये जो कोड यहाँ पर है this code is itself defining the class myThread and creating its object and starting it. This code is also creating an object thread T2 and starting it. So where will this code be? माना कि ये thread 1 है ये thread 2 है मैं आपसे पूछ रहा हूँ या पूछना चाहता हूँ कि ये फिर कोड कहाँ जाएगा सर ये कोड प्रोसेस का है प्रोसेस कैनॉट होल्ड एनीथिंग प्रोसेस तो पूरा है प्रोसेस तो पूरा है प्रोसेस सॉरी ये खाली थ्रेड है प्रोसेस तो कहेगा मेरे पास तीनों चीजें हैं ये कोड भी मेरा है थ्रेड T1 भी मेरा है थ्रेड T2 भी मेरा है प्रोसेस कह रहा तीनों चीजें मेरी है ओ तो फिर ये कोड किस में रखोगे आप ये कोड बाय डिफॉल्ट जाता है आपके मेन थ्रेड में इस चीज का हम ध्यान दे दें अभी कि हर कोड में कंपल्शन है हर कोड में कंपल्शन है कि देयर हैज टू बी अ मेन थ्रेड so every program which you have written till now my friends where you never did thread programming it was a case of one process with one thread and that one thread was a main thread तो जो भी कोड आप लिखते हो ना जो भी कोड एक हेलो वर्ल्ड का कोड भी लिख दो that code will be attributed by python as a part of the main thread so one process one main thread which holds your code भले आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा थ्रेड तो उस पे रहता है simple so the active count here should have been 3 let's see whether it is I'll explain to you after 2 minutes what is thread1.join and what is thread2.join supposed to do. I'll talk about it after 2 minutes. Let me run this code and show you. Please have a look. Starting thread 1, ID of thread 1. Starting thread 2, ID of thread 2. ये पहले दो लाइंस एंड नेक्स्ट दो लाइंस आउटपुट पे कहां से आए सो इट इज कम बिकॉज ऑफ जो रन फंक्शन आप यहां देख रहे हो ये रन फंक्शन कहता है starting concat self dot name id of the thread self dot thread id so
सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट थ्रेड हेड, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, ए और बी, ये प्रिंट कैसे हुई? सर हमने स्टार्ट कॉल किया, स्टार्ट से रन कॉल हुआ, ड्यू टू दिस टू आंसर गॉट प्रिंट। सिंपल। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आंसर 3 क्यों आएगा। दो थ्रेड्स आपने बनाए हैं और जो सारा कोड आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो सारा कोड आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कोड किस में लिखा गया? ये कोड खुद लिखा गया है मेन थ्रेड में, जो फिजिकली विजिबल नहीं है हमको, बट दिस होल कोड इज डम्प्ड by Python virtual machine in the main thread, due to which you get the count as 3. Okay, now let me explain to you what a join means. Now friends, so now you agree with me, I hope so, that there is a main thread which is not visible to our eyes. There is a thread T1 and there is a thread T2. So this main thread will actually start the thread T1, start the thread T2, but it can end. मतलब ये कंपनी का बॉस है सपोज, ये कंपनी का बॉस है और ये बॉस ने T1 को बुलाया, कुछ काम दिया, T2 को बुलाया और कुछ काम दे दिया, खत्म। T1 को बुलाकर काम दिया, T2 को बुलाकर काम दिया और खुद चले गए कि भाई तुम दोनों को मैंने अपना काम अलोकेट कर दिया है, चलो मैं अब जा रहा हूँ, आई एम लीविंग होम ओनली। So T1 is going to sit in office extra, T2 is going to sit in office extra, but the boss has left home. So you don't want this environment to be in an office. If you think you're going to work extra hours for the office work, your boss should also work for extra hours in the office work and should help you or should help or do some other work. So how do I ensure that the boss is not going to leave till both the threads, both the subordinates have finished their work? कैसे ensure करूँ? Simple है. Tell the main thread to join T1 and tell here also to join T2. So main joins T1, main joins T2. When you say join, then up till, I repeat, up till T1 finishes subordinate employee office का, जब तक वो अपना काम नहीं फिनिश करता और जब तक T2 अपना काम नहीं फिनिश करता, तब तक, I repeat, तब तक, till that time, boss cannot declare कि उसका काम फिनिश हो गया है, he cannot leave office. Simple. Oh, so that is what is the application of T1 dot join and T2 dot join. So मेन थ्रेड में सारा कोड लिखा हुआ है और मेन थ्रेड बोल रहा है कि वो ज्वाइन करना चाहता है T1 के साथ, ज्वाइन करना चाहता है T2 के साथ. वेरी नाइस, वेरी गुड. एंड फर्दर 25th लाइन पर आ रहा है एग्जिटिंग द मेन थ्रेड. अब ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है ना दोस्तों, ये तभी आ सकती है आउटपुट में जब थ्रेड 1 और थ्रेड 2 का आउटपुट आ चुका हो. मान लो एक मिनट के लिए मैंने ये कमेंट कर दिया, मतलब मैं मेन थ्रेड को नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन करो थ्रेड T1 के और T2 के साथ. अब देखना ये लाइन एग्जिटिंग मेन थ्रेड कहाँ बीच में भी आ सकता है. ध्यान से पहले आउटपुट को देख लो आप आराम से.
ओके, राइट। सो आई होप एवरीबडी इज रन एट एन एक्सपीरियंस द सेम थिंग। आपने भी अपना कोड रन किया होगा इसे कमेंट करके, और सेम चीज एक्सपीरियंस की होगी कि एग्जिटिंग द मेन थ्रेड किधर बीच में भी आ गया वो। देखिए ना कहाँ भी आ जा रहा है वो, जबकि आपका जो सेकंड थ्रेड है उसका आईडी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब मेन थ्रेड पहले ही खत्म हो गया और जो सबऑर्डिनेट्स है वो अभी भी काम कर रहे थे। अगर आपको ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए तो आप इसे अनकमेंट करके वापस से रन करोगे। दोनों केसेस को प्लीज ट्राई कीजिए। अगर आपने ज्वाइन रखा तो आप 100% श्योर हो कि मेन थ्रेड तभी निकलेगा जब सारा काम फिनिश हो चुका है, राइट। और ये भी सोचने की बात होती है कि कभी एक्टिव काउंट 3 आ रहा है, कभी एक्टिव काउंट 1 आ रहा है। एक्टिव काउंट भी सबको अलग अलग आ सकता है, 1 2 एंड 3। रिमेंबर एक्टिव काउंट आने का मतलब ये हुआ कि उतना ही थ्रेड जिंदा है। और 1 पता है आने का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ कि केवल मेन थ्रेड ही गिना जा रहा है। सो थ्रेड 1 भी फिनिश हो गया, थ्रेड 2 भी फिनिश हो गया। ओके, सो ये काउंट जो है एक्टिव काउंट 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, एनी नंबर। ओके, धीरज कम ऑन ऑडियो, एक बार ऑडियो पर आइए, मैं समझाता हूँ। ऑडियो पर आइए, आपका सवाल पूछिए। धीरज टू लिटिल लाउडर प्लीज, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। या वेरी डल आवाज बहुत डल है। यू हैव टू कम क्लोजर टू ऑडियो एंड यूज योर माइक्रोफोन। ओके, देन बी लिटिल लाउडर व्हाइल टॉकिंग। या हाँ, यू मीन टू से यू डिडंट गेट एनी आंसर लाइक 3 1 2 कुछ भी नहीं आया? ओके, इज योर कोड हैविंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट थ्रेडिंग डॉट एक्टिव काउंट? आपके कोड में है ना ये स्टेटमेंट? जरा चेक कीजिए, कमेंटेड तो नहीं है। हाँ, देन आउटपुट आना चाहिए ना, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट आना चाहिए। आप एक काम करो, अ, आप अपना जरा आउटपुट मुझे, ओके, आप अपना स्क्रीन जरा शेयर करो। कैन यू शेयर योर स्क्रीन टू शो मी? I have stopped presented my screen. You will notice on the bottom right corner there is a present now button. You can present your screen. Mhm. Yeah, Dheeraj, please, your screen is being presented. Please show the code which you're running. No, it's only a black screen which is visible. I don't see any code. In my code itself, it is not coming, sir. Okay, so can you, who is it? Deepa, right? Can you please share your screen quickly and just show it to me? I'll just figure it out here. Yes, Dheeraj is coming now. Hold on. Uh-oh, uh-oh. Deepa is presenting now. ठीक है, Dheeraj, hold on, Dheeraj, hold on. You both are, you have to both keep watching the screen, no? So both of you are overlapping each other's work. ठीक है, धीरज अपना स्क्रीन मुझे दिखा दो, होल्ड करो। दीपा होल्ड ऑन, लेट धीरज शो। Yes. हाँ धीरज, प्रेजेंट करो अपना स्क्रीन। क्या हो गया? क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग? एक साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हो सब लोग, कम ऑन, बी क्विक। इट इज विजिबल। ठीक है, ओके, रन योर कोड, शो मी द फाइल इन विच यू आर रनिंग द कोड, हाउ यू रनिंग इट, टेस्ट शो मी द आउटपुट।
ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट आपने रन किया ना कमांड प्रॉम्प्ट पर, उसको कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर रहे हैं ना। See Dheeraj or Deepa or anybody, whenever you share, you should always share your entire screen. Don't share a window or a tab. Share your entire screen. हाँ. Show me the running. Show run करके मुझे बताओ. Command prompt पर. Okay, so the point is that you are not running it on the command prompt, running on Python shell. Run on the command prompt. Yes, command prompt. You are executing on Python shell. This is not command prompt. This is Python shell. Shell पर तो एक single command run किया जाता है. Shell is meant to run a single command. It's not meant to run a program. When you have a script like this, you should run on the command prompt. Or what you can do if you are working in Colab, then you can take this whole program and run it in Colab also. That's also okay. हाँ करो यहाँ पर करके बताओ. Now you'll have to do the CD over here to path of Python. You should put the path of Python. You should not do a CD actually. You should do a right click, get the path of Python and paste it here so that वो Python के path पर आ जाए, because वहाँ से program run होगे ना आपके. You can run a Python program from FDB folder of desktop. ठीक, आपको जैसा करना है वैसा करो. आप मुझे पाइथन का प्रोग्राम जैसे पाइथन का प्रोग्राम रन करता कमांड शेल से, वैसे रन करके पहले मुझे बताओ. आप करो तब तक. जब इन द मीन टाइम I'll deal with Deepa's query. Please stop sharing. Deepa, please share your screen. Sir, actually, I am also doing in Spider. तो फिर आप सेम मिस्टेक कर रहे हो ना. From day Yes, one yes, I have been that's what I'm. yeah, day one I have been saying that you run on a command prompt. So आपको वहाँ समझ जाना चाहिए ना. शेल में थोड़ी रन करना है. शेल is only meant to run one single commands. Okay, fine. Yeah, I'm using that command prompt right. हाँ तो करके दिखाओ फिर. अभी बताओ मुझे करके. होल्ड कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स के लिए, या ज़्यादा समय लगेगा आपको. यस दीपा, आपसे पूछ रहा हूँ, ज़्यादा समय लगेगा तो आई विल कंटिन्यू. Sir, you continue, please. Sir, I understood what is the mistake that we are doing. ठीक है ठीक है. आई होप धीरज को भी समझ में आ गया होगा कि क्या मिस्टेक वो कर रहे हैं. फिर उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई. Fine. ठीक है. राइट. सो अब सबको समझ में आ गया कि स्टार्ट मेथड का क्या रोल है. वो रन फंक्शन को कॉल करता है. एक्टिव काउंट का पर्पस है कि इस इंस्टेंट पर, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, हाउ मेनी थ्रेड्स आर एक्टिव. नेक्स्ट, you understood the purpose of join. It is always meant that a parent should join the children, so that till the time children don't finish their work, parent shouldn't finish the work. और boss should join the subordinate. जब तक subordinate का काम खत्म ना हो तब तक boss ये लाइन प्रिंट ना करे. ओके, ज्वाइन भी आपको आई होप क्लियर है. Now, let's look at this another simple program, and then again I'm going to jump back to theory. Okay, creating threads and printing its details. So import threading, that is a threading module. Okay, मैंने एक flag variable यहाँ बनाया है.
uh, although I don't think I'm using it. No, I'm not using it, so I'll delete it. आप भी चाहिए अपने कोड से डिलीट कर सकते हैं एग्जिट फ्लैग इक्वल टू जीरो वेरिएबल को मैंने बनाया था लेकिन मैंने यूज नहीं किया उसको. ओके सो व्हाट डू आई हैव नाउ. हमारा यूजर डिफाइंड क्लास कंस्ट्रक्टर में हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रिक्वायर्ड चॉइस नहीं है, ड्यूटी है that if you want this class to work as a thread class, then it is extremely important for you to use threading module thread class dot init. So you are actually calling the constructor of the parent so that this fellow behaves like a thread. Now to define the run is doing nothing big. But I want to teach you a new method. So in threading module, we have a method called current thread. In threading module, we have a method called current thread, and this current thread is going to print details of all details of the current thread. Now what details does Python stores of a thread? कुछ देर पहले आपने पढ़ा था ना थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, तो कुछ डिटेल्स उसके बाहर अब आएगी. देखते हैं. दो थ्रेड ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए, इन दोनों को मैंने स्टार्ट किया. मैंने यहाँ पर जो मेन थ्रेड है ना, बिकॉज लाइन नंबर 18 तो मेन थ्रेड का हिस्सा है, दिस होल कोड इज द पार्ट ऑफ मेन थ्रेड, होल कोड. सो मैं मेन थ्रेड को पूछ रहा हूँ that I want your details. Main thread is welcome. Let's see, he will give me his details. Then I'm saying the main thread to join. That means go patiently जब तक subordinate threads finish नहीं होते, which means thread 1 and thread 2 जब तक finish अपना काम नहीं करते, तब तक हम main thread को कह रहे हैं कि आप अपना काम finish नहीं कर सकते. ठीक है. And then further we're exiting the main thread. So let's have a very close look what has come in the output. आपने सबसे पहले नोटिस किया कि हमने एक सेकंड, लेट मी शो दिस इन पैरेलल टू वेट. सबसे पहले आप नोटिस कर रहे हो कि थ्रेड 1 को हमने स्टार्ट किया, फिर थ्रेड 2 को स्टार्ट किया, और जो रन मेथड है हमारा, जो कॉल होगा थ्रेड 1 का और फिर थ्रेड 2 का, वो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रहा. वो तो बेसिकली थ्रेडिंग मॉड्यूल से थ्रेड 1 की डिटेल्स प्रिंट कर रहा है और फिर थ्रेडिंग मॉड्यूल से थ्रेड 2 की डिटेल्स प्रिंट कर रहा है. Therefore, what you can notice here is thread 1 started and this is the thread ID. ये thread ID है 14076. थ्रेड 2 स्टार्टेड, ये उसकी थ्रेड ID है 9196. और जो मेन थ्रेड है जो सारा कोड होल्ड कर रहा है, जो ऐसा आपको लग रहा था ये तो आर्टिफिशियल है या ये एक वर्चुअल चीज़ है, कोई चीज़ वर्चुअल नहीं है. आप देख लीजिए आपके आगे, इट रियली एग्जिस्ट. और जो मेन थ्रेड है या जो सारा जो कोड लिखा है आपने, ये 21 22 का जो कोड लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कोड पाइथन के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं. आपने तो सिंपल कोड लिखकर फाइल में सेव कर दिया, आपके नाम का फाइल rocky.py, deepa.py, suven.py करके सेव करके रन कर दिया. आपके लिए ये एक कोड फाइल है ना, पाइथन के लिए नहीं. पाइथन कहता है ये सारा मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है ऑफ द क्लास अंडरस्कोर मेन थ्रेड, जो एक प्री डिफाइंड क्लास है पाइथन में. और जो ऑब्जेक्ट, ये जो सारा जो कोड है, उसका नाम है मेन थ्रेड और उसकी भी एक अपनी आईडी है 13984. तो अगर मैं आपसे ये उल्टा सवाल पूछूं कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के पेरेंट आईडीज क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 को बनाने वाला मेन थ्रेड है. तो इसका मतलब थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के पेरेंट आईडीज हो गई 13984. I hope you are able to get all this stuff very clear. If any one of you is probably gone deeper or is teaching a subject called operating system,
and you refer a book called William Stallings, you would get each and every word which I'm talking, and you will be able to understand, okay, why am I emphasizing on going on all these aspects? Because if I want to keep track कि कौन सा थ्रेड रन हो रहा है और कौन सा थ्रेड खत्म हो गया, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है दोस्त. I have to keep track about the IDs of the thread because every thread is going to have a unique ID. नाम दो थ्रेड के सेम हो सकते हैं लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकते क्योंकि आईडी आपके हाथ में नहीं है, नाम आपके हाथ में जो मर्जी दे दो. बाय द वे यहाँ थ्रेड को नाम मैंने नहीं दिया, ये उसका ऑटोमेटिक नाम आया है. सो एज यू गो ऑन क्रिएटिंग थ्रेड्स, आपको नहीं जो आपने नाम दिया, कहाँ मैंने नाम दिया है, कहाँ नाम दिया आप बताइए ना. इनिट फंक्शन को मैंने कोई नाम कहाँ पास किया. सो आप जो देख रहे हैं थ्रेड हाइफन वन, थ्रेड हाइफन टू, दीज आर द नेम दैट इज गिवन बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन ऑन इट्स ओन to the threads. Okay, I hope this is going clear. Now I'm waiting for 1 to 2 minutes. I want all of you to run this code, and if you are done with running of this code, understanding this code, say me you're done on the chat. Okay, so I'm happy that Deepa Jain now finally could run her code. So Deepa, I hope you got similar output and running on from command prompt now. Yes, very good. And what about धीरज? धीरज आप भी रन कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से? Okay, very good. So friends, I have got acknowledgements from couple of people कि वो भी प्रोग्राम रन कर लिए, उनका भी सिमिलर आउटपुट आ चुका है. तो हम आगे बढ़ते हैं. Okay, now let me take you back to the theory notes and just do a quick discussion with this. But for that reason, I would need a little help of reading from your side. So I would request Dheeraj to please come on audio once again. Yes. So धीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब यहाँ पर फॉन्ट साइज है, क्या वो आपको क्लियरली विजिबल है या मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाऊँ? Okay. Now visible. Okay. So could you please read the threading module? एक्टिव काउंट फंक्शन हम कर चुके हैं, करंट थ्रेड फंक्शन हम कर चुके हैं, इन्यूमरेट फंक्शन हमने नहीं किया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ने के बाद मुझे समझाइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता होगा. प्लीज ओवर टू, पहले से आराम से पढ़ लीजिए, लाउड एंड क्लियर फॉर द ऑल एफडीपी पार्टिसिपेंट्स.
अब आपके वर्ड से मुझे समझना है कि आपको क्या समझा कि न्यूमरेट क्या करता होगा। हम्म। वेरी गुड। Count will be an active count, but enumerate is going to give a list of all thread objects. For example, अगर 10 threads आपने जैसे सही कहा, हाँ हाँ करेक्ट, आपको लिस्ट मिलेगा, राइट। सो अगर उसमें 3 threads एक्टिव है, T1 T2 और T3, तो you'll get a list of 3 thread objects as a part of enumerate. Very good. Can you please continue reading this set of methods also? Hmm. Yes, Dheeraj, very good. Now, Dheeraj, this questions which I'm going to ask now about these methods is not only to you, but is to everyone. So I want everyone to please be very prompt on your keyboard in answering over the chat. My first question, मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा और आपको मुझे बताना है कि उस सिचुएशन का सुटेबल मेथड कौन सा यूज करना चाहिए चैट में। ठीक है, अपने ऑडियोज को आप धीरज बंद रखो। मेरा पहला सवाल, मैं चाहता हूं कि मेरा मेन मेथड, सॉरी, मेरा मेन थ्रेड, that is my main program, should finish after all threads have finished. Should finish after all threads have finished. Which method will I use to do this work? Dheeraj, run is a wrong answer. Deepa Jain and Sonal have typed the right answer and there is join. That's right. मेन थ्रेड को ये बोलना है कि जब तक सबऑर्डिनेट थ्रेड्स अपना काम खत्म ना करें, तब तक आप अपने आप को एंड नहीं कर सकते। Join function will do this work. Very good. Okay. Next. मेरे पास 3 थ्रेड्स अभी है, T1, T2 और मेन। मैंने T1 को स्टार्ट किया, उसका एक आउटपुट आया। T2 को स्टार्ट किया, उसका एक आउटपुट आया। बहुत सुपर सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो आउटपुट आप देख रहे हो T1 या T2 का, वो कौन से मेथड से आता है? जो आउटपुट आप देख रहे हो T1 या T2 का, वो कौन से मेथड से आता है? मैंने कहा T1 को स्टार्ट किया, अच्छी बात है, T2 को स्टार्ट किया, अच्छी बात है, और आउटपुट मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वो आउटपुट कौन से मेथड के वजह से आ रहा है? दीपा, लेकिन स्टार्ट तो कोड ही नहीं करते ना, स्टार्ट तो खाली कॉल करते हैं। जो चीज हम कोड नहीं करते उसका उसका आउटपुट कैसे आ सकता है? बिल्कुल सही, रन इज द आंसर, दैट्स राइट। So whatever output you see here when you start the thread, because eventually when you start any thread, it is effectively calling the run function of the thread, due to which the output is seen very clearly here, right? Due to which the output is coming out over here, right? So it is a run method whose body produces the output. Correct. Next question. I have made the thread T1 and T2, but I forgot to give the name from my side. So now I wish that I should give the name
ABC to the first thread and DEF to the second thread. How should I do it? I made a thread, but I forgot to give the name to the thread. I know उसको default नाम मिल गया होगा, लेकिन default नाम नहीं चाहिए. मुझे अपने तरफ से उसका नाम set करना है ABC and DEF. Right. So right from Dheeraj up till everyone has given the right answer, this set name method will be used. Last question. After starting the thread T1, starting thread T2, and saying that the main thread has joined with both of them, and after joining step, I have written a print statement here, and in this print statement I am trying to check is the thread 1 and the thread 2 is alive or not. तो इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूं कि thread T1 and thread T2 are alive or not, तो क्या लगता है आपको आउटपुट आना चाहिए? Will it be true or will it be false? At this juncture अगर मैं चेक करता हूं जहां मैंने आपको इंडिकेट किया है, तो यहां पर आंसर ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए? Okay, so guide and grow onwards, everybody started answering. Okay, right. I would request Sudhir to please come on audio. Sudhir, please come on audio. Sudhir, I'm waiting for you. Please come on audio. Mic not working? Oh, my God. Okay, fine. Okay, I don't know what is the name of the person, but the ID comes here as guide and grow. Okay, so guide and grow, whoever is the person, please come on audio. Hello, sir. Yes, is it guide and grow? Yes, sir. Yeah, what's your Myself, Ranjit Pawar from Kolhapur. Ranjit Pawar? Okay, so Ranjit Pawar जी, please help me with this. आपका आंसर आपने टू दिया है, क्या मतलब क्या थिंकिंग था, टू कैसे आएगा, जरा समझाइए. Actually, sir, uh, so both threads are active. That's why they are live there. So we will use the true. Okay, it will give true. अच्छा. Okay, what is the use of the join function? Join them, make them live, sir. To connect with the main thread. तो थ्रेड्स आर एनी विच इज लाइव. थ्रेड को आपने जैसे स्टार्ट किया वो लाइव होता है. सो जॉइन का उसको लाइव और डेड करने का कोई लेना देना नहीं है. ओके, सो जॉइन मीन्स that the main thread cannot progress ahead till T1 and T2 have finished. अब सोच के बताइए आपका जवाब सही है, ट्रू? Yeah. Thanks. हाँ, नहीं नहीं, आपका जवाब ट्रू सही है कि आप चेंज करना चाहोगे? Yes, sir. True. सही है. ट्रू गलत है रंजीत. इट्स गोइंग टू बी फॉल्स ऑलवेज, बिकॉज जॉइन के बाद जॉइन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो मेन थ्रेड को यहाँ क्या यहाँ रोक देगा. ये सारा कोड मेन में लिखा हुआ है, तो वो आगे जाने देगा ही नहीं मेन को, क्योंकि वो कहता है कि जब तक थ्रेड T1 और T2 फिनिश नहीं होते तब तक मेन आगे नहीं बढ़ेगा. सो इसका मतलब अगर आप इस लाइन पर गए हो एग्जीक्यूट करने के लिए, इसका मतलब क्लियर सा हो गया कि T1 T2 फिनिश हो चुके होंगे. तो जॉइन आपको आगे जाने देता ही नहीं था. सो yeah, so because join is allowing you to move ahead, which means that T1 T2 would have got finished, and therefore the print statement of is alive will always, not in one situation, in all situations will always print answer as False. perfect. Very good, very good. And please do come more often on audio so that our interaction happens. Yes, sir. Yes, yes.
So I'm very sure that theoretically the methods are clear to you, so that when I use it next time in my code, I don't see any person having difficulty. Right. Now we are looking into this kind of a coding now, where I want to introduce to you some function called sleep. The sleep function is merely used for creating a delay, which I know most of you know it. आप सबको पता होगा कि स्लीप फंक्शन शायद आपने और किसी लैंग्वेज में यूज किया हो, आपको पता है भाई स्लीप का काम होता है डिले क्रिएट करना, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इस कोड में आकर स्लीप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ दिस कोड is going to work. This is a little, it's not a complex code, but it looks complex unfortunately because of its nature of coding, you know. So if somebody is not used to Python coding, may find thread programming a little clumsy, और ये सब क्या है, बहुत सारा काम करना पड़ा छोटे काम के लिए, but that is needed for concept building, you see. So we are having creating two threads, joining main to the two threads. I am importing not only a threading module, but I'm also importing the time module here. And then what I see further is, okay, exit flag. I don't think so I'm using it. Okay. This time I'm using it. Okay. Okay, I will be using this variable exit flag. Huh? Okay, now this particular code I'm going to explain once, but trust me, there is a high possibility that I'm again repeating. For people who are used to Python programming or are teaching programming in their colleges, they will understand Zoop. But who are not teaching on regular basis, they're teaching some other subject. Although in Com Science and IT department, there are so many different subjects, no? So if it is teaching something different, then it may not immediately connect. So I am going to request Mispita. Mispita, are you around? Please tell me a hi on audio. Yes, sir, I'm there. You're there. Fantastic. So Mispita, I'm going to give this responsibility to you. It's not a choice. It's a responsibility that you will have to re-explain this code once I finish my explanation. Okay, sir. Right? Yeah. Thank you. Right. So let's understand this code, friends. Very clearly we notice that we are defining a class called myThread. It has a constructor. We have done something in it. Don't worry about it right now. And it has a run function which prints the name of the thread. It calls a function called print time. The run function in turn calls a function called print time. Print time is not defined inside a thread. Print time is defined outside a thread. It's an individual function. Print time एक individual, एक अलग सा एक individual function है. So print underscore time is taking some parameters like self.name, self.counter and some value 5. I will discuss each and everything about it. Please don't worry. खाली हम ऊपर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो रन फंक्शन थ्रेड का है वो थ्रेड का नाम प्रिंट करता है, वो प्रिंट टाइम कॉल करता है और फिर वो प्रिंट करता है एग्जिटिंग और अपना खुद का नाम, ठीक है। नाउ आई एम कोलैप्सिंग, क्लोजिंग, कोलैप्सिंग मींस क्लोजिंग द क्लास माय थ्रेड। आई एम लुकिंग एट दिस फंक्शन कॉल्ड प्रिंट टाइम। क्या खास क्या है इसमें? व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? I don't know what is special about it. Let's see. Okay, so this print time function is taking a thread name from the outside world. It is asking the outside world how much delay you want to create. 1 second, 2 seconds, 5 seconds, 20 seconds, what delay you want to create. So we're taking from outside world what delay you want to create. And the counter value will decide how many times this while loop should run. So the counter is 3, suppose, the counter is 3. Then this while loop is going to run for 3 times. How did I say that so quickly? Because you can see the counter minus 1, na? That means counter has been decremented by 1 each time, which very clearly indicates to you that अगर आपने counter को 3 पास किया तो 3 2 1 करके वो रन करेगा, 5 पास किया तो 5 4 3 2 1 करके रन करेगा। मतलब जो काउंटर पास करेगा उतनी बार ये while loop काम करने वाला है। सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस कोड में देखते हैं कर क्या रहे हैं हम। ओके, इस कोड में एक इफ लॉजिक है जो चेक करता है एग्जिट फ्लैग की वैल्यू। दोस्तों इनिशियली एग्जिट फ्लैग 0 है, देखिए 0 का मतलब फॉल्स होता है, हाँ बिल्कुल।
सो इसका मतलब हो गया कि इफ फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली आप इफ की बॉडी में नहीं घुसोगे. सो लाइन नंबर 23 is therefore skipped. You'll come on. The time module which you imported above, the time module which you imported above, dot sleep means you're putting the time module to sleep by providing some delay. You're putting the time module to sleep by providing some delay. The delay which you provided now was let's say 5 seconds or 10 seconds. So you put the thread to sleep for 10 seconds. मतलब जिसने भी print time को call किया, that fellow or that thread is going to experience a delay of some seconds. After that delay or after that pause, 25th line will be executed, where we would see percentage s means string thread name. So I'm printing a thread name, right? And this piece of code here is just to print the current time. Okay, c time means current time. Okay, so this is a way you write it in Python to get the current time. अभी का जो समय हुआ है 12:08 some seconds. And then I'm decrementing the counter by 1. So if the counter value is 3, this will run for 3 times. And let's say the delay is 1 or let's say delay is 2 seconds. तो आउटपुट कैसे आएगा? पहले आपका थ्रेड का नाम आएगा, फिर करंट टाइम आएगा और ये चीज़ 3 बार आएगी लेकिन एक डिले के बाद. ठीक है. अब इस कोड में प्रिंट टाइम हमको क्लियर हो चुका है. फाइन. अब देखते हैं कि इस मेन थ्रेड में, अब आप सोचोगे मेन थ्रेड कहाँ से आ गया भाई, ये पूरा सारा कोड किस में लिखा हुआ है? ये 37 लाइन्स का कोड किस में लिखा है आपने? मेन थ्रेड में लिखा है ना? सो आपका जो मेन थ्रेड है अब वो क्या कर रहा है? मेन थ्रेड सेज आई विल मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड 1, थ्रेड 2, कूल. Be very careful in getting clarity in what numbers I'm passing here, because this is something which I'm purposely done to confuse, so that your vigilance is important. You cannot have a casual look on the program and say समझ में आ गया. This one, this thread 1 name and this one have a meaning. The init function here, so thread name, sorry, okay, this one is going on thread ID, thread 1 is going on thread name, and this one here is going as a counter. Now just to avoid confusion, I'll keep thread ID as 100 and 101. वापस रिपीट कर रहा हूँ. Just to avoid confusion, I'll keep the thread ID as 100 and 101. 100 and 101. Okay? So 100 थ्रेड आईडी में गया, थ्रेड -1 थ्रेड नेम में गया. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थ्रेड -1 ही देना है. चलो आपका मन नहीं है देने का, एबीसी देते बस. गिविंग थ्रेड नेम इज एबीसी, सेकंड थ्रेड नेम इज डीएफ, और इवन बेटर यार, इवन बेटर, विल गिव द थ्रेड नेम एज फर्स्ट एंड सेकंड इन इंग्लिश. वैसे वो प्रिंट तो समझ में नहीं, आउटपुट कहाँ से आया. और जो जो थ्रेड फर्स्ट है ना, उसको आपने एक 1 पास किया जो काउंटर वेरिएबल में गया, एंड 2 पास किया वो भी नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल में गया. सो 2 थ्रेड्स आपके पास है, थ्रेड 1 थ्रेड 2, पैरामीटर्स आपको क्लियर है. पहला स्टेप तो रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा, कॉलिंग द पैरेंट. जो थ्रेड आईडी दी 100 और 101 वो असाइन हो गई, थ्रेड का नाम भी असाइन हो गया. ये क्या है भैया? काउंटर. एक्चुअली एक काम कर सकते हैं यहाँ पर में, फॉर बेटर क्लियरिटी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम एज काउंटर हियर, आई विल यूज द नेम एज डिले, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आल्सो मेक दिस करेक्शन योर कोड. बट फर्स्ट वॉच मी, आराम से मुझे वॉच कर लो पहले, बाद में करेक्शन करना अपने कोड में. init function of the my thread, I'm keeping the third parameter as delay, and I'm going to use that parameter here also. So thread object जो बन रहा है उसमें thread ID आ रहा है, thread का नाम आ रहा है, और thread कितने डिले के साथ रन करेगा. thread will run
विथ हाउ मच डिले, वो भी आ रहा है। ओके, रन में हम क्या कर रहे हैं, रन में वी आर प्रिंटिंग नेम ऑफ द थ्रेड, वी आर कॉलिंग द प्रिंट टाइम फंक्शन, और प्रिंट टाइम फंक्शन को हम लोग 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। पहला थ्रेड का नाम, सेकंड थ्रेड रन करेगा कितने डिलेस के साथ। अगर आप मुझे कहते हो डिले 1 सेकंड है, तो थ्रेड इज गोइंग टू रन ईच टाइम विद 1 सेकंड डिले। पहली बार रन किया 1 सेकंड होल्ड किया, सेकंड टाइम रन किया 1 सेकंड होल्ड किया, ऐसे। और कितनी बार रन करेगा, 5 बार। ये आपने फिक्स नंबर दे दिया, टेंशन नहीं, ये नंबर आपने फिक्स कर दिया। सो प्रिंट टाइम टोटल 5 बार अपना आउटपुट देगा। तो आपने क्या किया, ये प्रिंट टाइम शुरू करने से पहले थ्रेड का नाम प्रिंट किया, प्रिंट टाइम 5 बार रन करेगा, खत्म होने के बाद वापस कहा एग्जिटिंग और थ्रेड का नाम प्रिंट किया। अब इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, वो देखने से समझेगा आपको। थ्रेड 1 और थ्रेड 2 को आपने ज्वाइन करवाया है किससे, मेन से, बिकॉज सारा कोड मेन में लिखा है। तो मुझे ऐसा एक्चुअली कहना चाहिए कि मेन को आपने ज्वाइन करवाया है थ्रेड 1 थ्रेड 2 से, जिसकी वजह से, आई रिपीट, जिसकी वजह से आपका थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 दोनों, क्योंकि ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि ज्वाइन हो चुके हैं आपके मेन से, जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो गए तब तक मेन का कंट्रोल 37th लाइन पर नहीं जाएगा। ठीक है, अब जरा आउटपुट को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर मैं आपको एक अपना स्क्रीन फ्रीज करके रखूंगा 2 मिनट के लिए। अब मैं चाहूंगा कि आप भी ये करेक्शंस करें या चेंजेस करें, करेक्शंस नहीं, चेंजेस करें जो मैंने किया है। दोनों थ्रेड स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट पे स्टार्टिंग सेकंड आया। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमेशा फर्स्ट 2 बार प्रिंट होता है, फिर सेकंड 1 बार, वापस फर्स्ट 2 बार सेकंड 1 बार। ऐसा क्यों, बिकॉज फर्स्ट को डिले 1 सेकंड का है और सेकंड को डिले 2 सेकंड का है। तो जब भी फर्स्ट, फर्स्ट का डिले 1 सेकंड का है ना, और सेकंड का डिले 2 सेकंड का है, मतलब जब भी आप सेकंड को स्लिप करवाओगे, उसके दरमियान, उसके फासले में फर्स्ट को 2 बार चांस मिलेगा रन होने का। आई होप यू गेटिंग मी। फर्स्ट को डिले आपने 1 सेकंड का दिया, सेकंड को डिले 2 सेकंड का दिया, मतलब जब सेकंड 1 बार रन होगा तो आपका फर्स्ट 2 बार रन हो चुका होगा, और वही हो रहा है आपके सामने। और ये कट्टू का टाइमिंग के मुताबिक चल रहा है, जैसे आपको दिखना चाहिए सब कुछ। अब नेचुरली है कि एग्जिट पहले, तो एग्जिट फर्स्ट एग्जिट पहले कर देगा, बिकॉज फर्स्ट को जल्दी खत्म हुआ, वो बिल्कुल डिले कम था तो जल्दी वो खत्म हुआ। 5 आउटपुट दिए होंगे फर्स्ट टाइम, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, करेक्ट, एग्जिटिंग फर्स्ट। सेकेंड ने 5 आउटपुट दिए हैं, वो भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, एग्जिटिंग सेकेंड। कुछ भी कर लो, एग्जिटिंग मेन थ्रेड लास्ट में ही आएगा, क्योंकि आपने मेन को ज्वाइन करवा दिया है दोनों थ्रेड्स के साथ। ऐसा सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकता कि आपका जो मेन है वो पहले खत्म हो जाए और सबऑर्डिनेट्स बाद में, ऐसा नहीं होगा। मेन हॉल्ट हो जाता है 36 लाइन पर, आगे बढ़ नहीं पाता बेचारा। ठीक है, आई होप दिस इज गॉन क्लियर। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, first of all, in the next 1 or 2 minutes, for all of you to make required changes first. मैंने कहाँ चेंजेस किए, वापस दोहराता हूँ। मैंने पहला चेंज किया है इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैंने लास्ट पैरामीटर डिले के बजाय, काउंटर के बजाय डिले कर दिया है, और फिर वो करस्पॉन्डिंग चेंज आपको लाइन नंबर 11 पर भी दिखेगी। तो काउंटर के बजाय मैंने डिले किया है। पहले आप ये चेंजेस कीजिए प्लीज, काउंटर निकाल कर डिले डालिए और 11th लाइन पर चेंजेस अकॉर्डिंगली कीजिए। मैं होल्ड कर रहा हूँ, पहले आप चेंजेस कीजिए।
राइट, आई बिलीव मुझे किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया डन करके, बट आई बिलीव कि आपने इनिट में जाकर रिक्वायर्ड चेंजेस कर लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इनिट को कोलैप्स कर रहा हूँ और नेक्स्ट चेंज आपको जो करनी है वो ऐसा है कि आपको प्रिंट अंडरस्कोर टाइम फंक्शन कॉल करना है और प्रिंट टाइम फंक्शन में सेकंड पैरामीटर को सेल्फ डॉट डिले रखना है। प्लीज ये चेंज कर लीजिए। राइट, आई होप आपने चेंजेस, एक माइन्यूट चेंजेस है वो कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेंज आपको जो करना है वो ये है कि प्रिंट टाइम फंक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं है, प्रिंट टाइम फंक्शन रिमेन्स एज इट इज। हाँ, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 जो आप बना रहे हो उसमें आपको थ्रेड का नाम थ्रेड 1 थ्रेड 2 नहीं देना है, इंस्टेड आप दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज मेक द चेंजेस क्विकली। थ्रेड 1 थ्रेड 2 में थ्रेड का नाम फर्स्ट एंड सेकंड दीजिए और आईडीज को कीजिए 100 एंड 101। डोंट गिव द आईडीज 1 एंड 2 बिकॉज उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 यहाँ भी लिखा है 1 यहाँ पर भी लिखा है। अभी ठीक है, अभी सब क्लियर होगा आपको, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जैसे ही चेंजेस हो जाएं आपके, प्लीज मुझे सिग्नल दीजिए। मैं आपको देख तो नहीं सकता, तो एटलीस्ट आप मुझे चैट पर सिग्नल दोगे तो मुझे समझेगा मुझे आगे जाना है। ठीक है, right, so quite a few people have done the changes. Now please run your code and acknowledge are you getting the same output or not, or at least similar, not same, at least similar output. ठीक है, so I hope like majority of you got the same output. So now I would invite Vispita to re-explain this code so that if anybody's got stuck or confused somewhere due to some voice problem from my side, then at least you have a second listening. Yeah, Vispita, over to you. Thank you, sir. Yeah, First two lines of the code says that we are importing threading and importing time. perfect. Then we are using a flag which is being set to a value of false, that is 0. Correct. Then we have declared a class, my thread. Class is telling us we have to initialize our threads. Correct. So to initialize the thread, first is self, second is its ID, thread ID, Hmm. third is its name, and fourth is its delay. For how much time we want the delay. Hmm. Then we have a line where we have said self dot name. So name of the thread will be there with the ID, name, and delay. Correct. All the three will be there. Perfect. Then we have defined a run process where we are telling how our threads will start to run. Whether we want thread 1 to run or whether we want thread 2 to run. Hmm. So doing that, when to start and when to stop the threads. Hmm. For that, we have written these two lines: print starting the name of the thread. Then second line we have written time self dot name comma self dot delay for how much time we want that delay. Perfect. So that figure is being given out as 5.
Then Delay is what you have already given, like 1 or 2 seconds. What is 5? 5 is not delay. 5 is a counter, Correct. I suppose. Correct. Five is a counter. Yeah. Right. For how much time we want thread 1 and thread 2 be there. Correct. So So how that many counter times? is initialized. Right. How many times you run the first thread and the second thread? Correct. Yeah. Hmm. Then we have defined print time from our time. There we have said first variable is thread name, second is delay, and third is counter. These are being used as arguments. Then we are checking out the condition of counter, whether we are getting thread 1 and thread 2 5 times or not. For that, we are using the condition if exit flag. If that is true, then it will come out. If that is false, then it will go to print the time of the delay. Correct. It will put the thread to It will, sleep. if you want thread 1 to sleep for some time, then thread 1 will be kept on hold for some time, and then thread 2 will start. Correct. Then we have the main thread, which is being written as thread 1 is equals to my thread 100 comma first comma 1, where we are trying to put the names for the first thread and second thread. Now Okay. to start the thread, like if I want to start the thread, then thread 1 and thread 2 has to be written. So that is being written in line 33 and 34. Thread 1 dot start the function, thread 2 dot start the function. Then thread 1 join and thread 2 join is going to give us the values when it has been started and when it will exit from the main thread. Here, I think you need to rephrase your sentence. So Okay. you didn't explain what join was supposed to do actually. थोड़ा सा rephrase कीजिए. I know you know the answer. Just rephrase your words. सर जॉइन जब हम यूज करते हैं तो हम बताते हैं कि थ्रेड 1 या थ्रेड 2 कब रन हो रहा है. No, no, no. So here in 35th and 36th line, Vismita, we are telling that main has to join hands with thread 1, main has to join hands with thread 2, Hands with thread. and therefore we are telling main that don't proceed ahead till thread 1 and thread 2 finish their work. Okay. Right? Huh. So when do you think control will come to the 37th line? Whenever the compiler will get the information that thread 1 is over, As well? as well with thread 2. Correct. So only when the compiler gets the intimation that thread 1 and thread 2 is over, only then the Then and then only we will have that last print sentence. correct. So here I could have maybe 100 more lines of code after this. Yes. But Yes. those 100 more lines of code will only execute after the thread 1 and thread 2 have finished their work. Perfect, perfect. Yeah. अब इस पूरे program में Bachmita, would you like to ask me anything? Like for example, just in case if you felt that I need to go little, just talk about this. So would you like to ask me? Because you explained the whole code perfectly well. But आपके ध्यान में कुछ ऐसा है जो आपको मुझसे पूछना है? सर एक्चुअली थ्रेडिंग जो है, जैसे हम प्रोसेसर्स का सब्जेक्ट लेते हैं तब हम प्रायोरिटी सेट करने के लिए बताते हैं कि आज मेरी ये प्रायोरिटी है, तो ये प्रायोरिटी के साथ और सब प्रायोरिटीज भी हैं. तो जैसे एक थ्रेड अगर हमें यूज करना है तो मेन थ्रेड के साथ कितने और सब थ्रेड्स रन कर सकते हैं. तो वहाँ पर मुझे ये लगा कि जैसे आपने क्लास किया, क्लास माई थ्रेड किया, तो इनिशियलाइजेशन करना हर थ्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो थ्रेड रन नहीं होता है. जी, करेक्ट है. तो फिर ये हमने मेन थ्रेड के लिए क्यों नहीं किया, मुझे वो पूछना था. Okay. नीचे में हमने जब मेन थ्रेड बोला है तो हमने मेन थ्रेड के लिए क्यों नहीं किया. Right, right. So very good question. So first of all, this whole code, ये जो पूरा का पूरा जो कोड है, आपको याद होगा जब मैंने मेन फंक्शन में या मेन थ्रेड में जब प्रिंट किया था डॉट करेंट थ्रेड Yes. डिटेल्स. Yes. सो उस टाइम आपने देखा था कि ये जो सारा का सारा जो पूरा कोड है was printing this method current thread. It was printing Yes, the sir. main thread Yes. and also its ID. So yeah, so what happens is that when you actually write a code like this, आप अगर कोई भी कोड लिखते हो, आप ये सबको छोड़ दो, खाली आपने अगर इतना भी कोड लिखा, write is one line code
and you run it, you will say, "Arey yaar, so straightforward, I'll get the output." But this code has internally ran as like this: a single process with a single thread, जी. where that single thread by default is the main thread, which is being instantiated or created by the Python virtual machine to run the code which you have written inside it. Okay. Okay, sir. Yeah, so if actually speaking, जो ये print statement आप यहाँ देख रहे हैं, वो actually main thread का run का हिस्सा है, और वो run कर रहा है main के अंदर. Yeah, Thank you, sir. sure. Okay. Now, friends, let me give you a small heads up of what I'm going to do in the afternoon when I meet you from 2 to 4 today. Just in case if people have joined in late, because I could see somebody people have come in late, because today's session is 10:30 to 12:30 only, 2 hours, and then we have the next session at 2 to 4. That's what my timings were. Okay, and so to be honest, after this current thread and this delay, we are going to enter into a topic called synchronizing threads. So in this, we are going to learn about lock as a object, and lock has methods like acquire and release. Then a quick read on re-entrained locks, a quick read on semaphores. Then we are going to just pick up a code to understand the importance of synchronized function by referring this code called multi-thread priority queue. But so either I will take this code, or I'm going to take wait. Yep. So I would not be taking up that code of priority queue. I've kept it there. That's okay. But I didn't find it very comfortable after coding the whole thing, uh, so that people are going to really understand the use of lock and acquire and this thing. So I would prefer to go in for explaining the producer consumer problem implementation. This is a very peculiar problem in microprocessor programming or an operating system. So we have coded this whole thing here. So we will spend little more time, because this is like Hercules. This usually takes 30-35 minutes. आप जरा समझिए कि 30-35 मिनट अगर कोई प्रोग्राम को समझने में लग रहा है, तो वो फिर डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, राइट? सो दैट्स अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. Acquire, and then release the lock, acquire the lock, and then condition objects, events, all will get cleared in one single program. Okay, so we are going to spend time like this. I think it should take us 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes minimum in doing this. If the last half an hour is left, I won't leave anybody early. During that time, I'll be picking up the first module, classes and object, and I'll be talking about it because there is a project there. So I would be preferring to take up the project along with all of you in the class. And moreover, thread programming and classes and object programming is all in same, because threads is also classes and objects. Okay, right? So I hope I have been very clear of how our flow ahead is also going to be. Right? I would call upon uh, Lubna or Samreen uh, to conclude the session, the morning session, so that we can Yes, sir. proceed. Yeah, Yes, Lubna, sir. over So to you. afternoon we'll start at 2, right? Yes, absolutely, at 2. Okay, okay, sir. So Thank you so much. I And hope, those who are asking for sir's YouTube channel's link, we will share it on the WhatsApp. yeah, sure. So Lubna, I hope the feedbacks are coming positive and the speed and the Yes, sir. audibility is clear. Everything clear. No issues. Sure. Thank you, Lubna. Bye bye. Thank you, sir. See you in the afternoon. Sure, Bye. sure. Bye bye. Thanks all.